हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स बाय बुढ़ानिया सर। जैसा कि आपका नेक्स्ट एग्जाम मैथ्स का है, तो आज अपन जितने भी टाइप की केस स्टडी जा सकती हैं वो सारी केस स्टडी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अपन 10 केस स्टडी सॉल्व करेंगे। अगर आपने सिंसियरली इनको कर लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर सॉल्यूशन देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला जो वीडियो होगा उसमें अपन जितने भी टाइप के असर्शन रीजन क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट केस स्टडी बोल रही है, द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49. Let there be a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. मीन्स यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि जो हाउसेज हैं, सपोज करो यहाँ पे फर्स्ट हाउस है, सेकंड है, फिर थर्ड है, एंड सो ऑन जाते जा रहे हैं अपन कहाँ तक, 49th हाउस तक। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से इनको नंबर्ड कर रखा है। ओके, बोला गया है कि कहीं पे बीच में एक ऐसा घर है जिसका नंबर है एक्स, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैं बोलता हूँ लेट से वो एक्स टर्म है। भाई मुझे बताओ, ये एक एपी बनेगी। अगर एपी बन रही है और जिस हाउस का नंबर एक्स है, तो उस एपी में अपन उसको क्या बोल सकते हैं, अपन उसको बोल सकते हैं ए एक्स हाउस। क्लियर है? ओके। तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल हाउसेस नंबर्स प्रीसीडिंग एक्स। तो ध्यान रखो, यहां पे आपको जो ये घर है, इससे पहले जितने भी घर हैं उनके जो नंबर्स हैं उनका सम बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए कि जो इस x की वैल्यू क्या है, ये कौन से नंबर का घर है। तो ध्यान रखना, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन 3 में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। उसके बाद ऊपर वाला अपन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन थर्ड। तो यहाँ पे अपने को क्या क्या पता है, अपने को a पता है, a इज 1। ओके, नेक्स्ट अपने को d पता है, d क्या है, दैट इज ऑल्सो 1। 2 minus 1 3 minus 2 दैट इज 1। Okay, now what we are given in the question that the sum of the number of houses preceding the house ax, तो यहां पे ये जो सम है that will be equal to the sum of the number of houses following it, means इसके आगे वाले जो हाउसेज हैं उनके जो नंबर का सम है वो इक्वल होगा जो ए एक्स से पहले वाले जो घर जितने भी नंबर हैं उनका सम के बराबर। तो अपने को यहाँ पे सम गिवन है। सम क्या है, मैं बोलता हूँ एस। मुझे बताओ ए एक्स से पहले वाली टर्म क्या होगी, ए एक्स माइनस 1, और ए एक्स के बाद वाली टर्म क्या होगी, ए एक्स प्लस 1। ओके, सो यहां बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट x माइनस 1 टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम x प्लस 1 टू 49। ओके, तो अपन ये कंडीशन अप्लाई करके अब क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मुझे बताओ सम ऑफ x माइनस 1 टर्म। सो अपने को यहां से पता है कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, दैट इज n by 2। n इज नंबर ऑफ टर्म्स, सो हियर नंबर ऑफ टर्म्स आर x minus 1 by 2 into 2a, a is 1, so 2 into 1 plus n minus 1, that is x minus 1 into d, d is also 1 is equals to n by 2। तो यहां पे अपन अगर देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली, अपने को पता है कि यहाँ पे अपने को ओड नंबर ऑफ हाउसेस दिए हुए 49, तो मैं क्या करता हूँ, ओड नंबर्स की अपन एक एपी ले लेते हैं। मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब मैं बोलता हूँ इस 3 के बाद कितनी टर्म्स हैं, तो अपन क्या करते हैं, सिंपली 7 माइनस 3 करते हैं, दैट इज इक्वल टू 4। 4 ही टर्म्स अपने पास। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ, बताओ 5 के बाद कितनी टर्म्स है, दैट इज 2, दैट इज 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये कॉमन सेंस अपने को अप्लाई करना है। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे कितनी टर्म्स होंगी, दैट विल बी इक्वल्स टू, अपन बात कर रहे हैं एक्स नंबर के बाद वाली टर्म्स का, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 49 माइनस एक्स बाय 2 इंटू 2a। तो यहाँ पे जो a होगा अपना, दैट विल बी x प्लस 1, because ax plus 1 will be equals to x plus 1 only। 49th जो टर्म है दैट इज 49, सेकेंड टर्म इज 2, थर्ड इज 3, सो ax plus 1 टर्म जो होगी अपनी वो भी क्या होगी, x plus 1 ही होगी, दैट इज 2 into a is x plus 1 plus
n minus 1, that is 49 minus x minus 1 into d is 1। यहाँ से अपन जो डिनोमिनेटर में 2 है इन दोनों के वो अपन कट कर देंगे, तो यहाँ से अपने को मिलेगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड x minus 1 into 2 plus x minus 2 is equals to 49 minus x into, this is 2x plus 2 plus 48 minus x. On solving it further, we will get x minus 1, 2 will cancel out 2, this is into x is equals to 49 minus x into, from here we will get 2x minus x, that is x plus 50. Solving further, we will get x square minus x is equals to, now multiplying 49 to the whole bracket, we will get 49x plus 2450 minus x square minus 50x. Now further solving it, we will get x square minus x, 49x minus 50x, that is minus x plus 2450 minus x square. Taking the right hand side terms to the left hand side, we will get x square minus x plus x square minus 2450 equals to 0. X will cancel out x, so we will get 2x square, and taking this to the right hand side, we will get 2450, and x square will be equals to 2450 by 2, that is 1225. Now x square is equals to 1225, so x will be equals to under root 1225, and we will get plus minus 35. Here the value of x can't be negative because x is the house number, basically can't be negative. So here x will be equals to 35 is the answer. Clear? Now since we have found the value of x, we can easily solve all other questions. So let's solve first question. In question number 1, it is asking find the sum of all houses number preceding x. x से पहले वाले जो नंबर है, x की वैल्यू अपन फाइंड कर चुके हैं, that is 35. So what we have to find is S34. So S34 will be equals to n by 2, that is 34 by 2 into 2a, a is 1, plus n minus 1, that is 34 minus 1 into d is also 1. From here we will get 17 into 2 plus 33, and from here 17 into 35, that is equals to 595. This is the answer. Clear? Okay, now let's proceed to question number 2. Question number 2 is asking find the middlemost house number. For that, we know that number of terms are odd, so middle term will be n plus 1 by 2th term. Middlemost house number will be 49 plus 1 by 2, that is 50 by 2, that is 25 is the answer. Clear? Okay, now third or part is asking find the sum of house numbers which are multiple of 2 or 3. Now we know that multiple of 2, what are multiple of 2? That is 2, 4, 6 and so on till 49. So the last term will be 48. Okay, multiple of 3, that will be 3, 6, 9 and so on, and last term will be 48. अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि कुछ जो नंबर्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं, जैसे यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, यहाँ 48 है, यहाँ भी 48 है, इसी तरीके से 12 इसमें भी होगा, 12 इसमें भी होगा. So what we are getting is multiple of 6 are common in both the APs. So the terms which are common will be of multiple of 6, 6, 12 and so on till 48. Okay. Now we have got 3 APs. This is AP1, this is AP2 and this is AP3. Now what we will do, we will find the sum of first AP and will add to the sum of second AP minus
Because since these terms are repeated twice in above APs, so we will minus sum of AP3 from the sum of first two APs. Clear? So for first AP, A is 2, D is also 2, and for AP2, the A is 3 and D is also 3. In AP3, A is 6 and D is also 6. Because we are finding the multiples of 2, 3 and 6 only. Na? So D will be the same. And in AP1, number of terms that is equals to, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता लगेंगे, जैसे यहाँ पे मैं बात करूं 2 3 जा 6, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 3, so 2 into something that is equals to 48 will be number of terms, so 2 into 24 that is 48, so n will be 24. और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप फॉर्मूला लगा लो भाई ए एन वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से भी अपन एन निकाल सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 48 रखेंगे, ए मेरा 2 हो जाएगा प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इज 2, so from here 46 equals to n minus 1 into 2 and 2 will be in denominator, so it will be 23, so n is equals to 24। अपन इस तरीके से भी इसमें निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से AP2 के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, दैट इज n इक्वल्स टू 3 16 3 जा 48, सो n विल बी 16। एंड थर्ड AP के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, दैट इज n इज इक्वल्स टू 8। क्लियर? आप यहाँ पे एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम के अंदर आप nth टर्म वाले फॉर्मूले से क्या कर दोगे, इसको सोल्व कर देना, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको समझा दिया मैंने, आप वैसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट AP दैट इज इक्वल्स टू n बाई 2, n इज 24 बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बिकॉज अपने को दोनों टर्म्स पता हैं तो अपन फॉर्मूला लगा लेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला। सो यहाँ से हो जाएगा अपना 12 इंटू 50 दैट इज इक्वल्स टू 600। नाउ सम ऑफ सेकंड AP that is n by 2, that is 16 by 2, first term that is 3 plus last term is 48, so from here we will get 8 into 51, so from here we will get 408। now sum of third AP that is equals to number of term that is 8 by 2, first term is 6, last term is 48, so we will get 4 into 54 that is equals to 216। यहाँ से अपन लिखेंगे therefore sum of house numbers which are multiple of 2 or 3 will be equals to S1 plus S2 minus S3, that is equals to S1 is 600 plus 408 minus 216, that is equals to 792। this is the answer। clear? okay, next question number 2 is saying given figure represent side of view of the table used by an electrician, ABCD is trapezium with AB parallel to CD, AB is parallel to CD, okay, AP and BQ are perpendicular to CD, so this AP and BQ both are perpendicular to CD। if they are perpendicular to CD, since AB and CD both are parallel, so this will also be perpendicular, okay। line segments RS and LM are drawn parallel to AB such that AJ equals to JK is equals to KP, okay। now it is saying RS and LM are drawn parallel to AB. If it is parallel to AB, this will also be parallel to CD. AB and CD both are parallel, okay। now it is saying that AJ is equal to JK is equals to KP. if AB is equals to 0.5 meter, means this is 0.5 meter, AP is equals to BQ, that is this whole length is equals to BQ, that is 1.8 meter,
and angle ACP is equals to BDQ is equals to 60 degree. So ACP, this is 60 degree, and BDQ, this is also 60 degree. Okay, take root 3 is equals to 1.73. Okay, now question number 1 is asking find the length of AC. So here what we have to find is we have to find this length AC. Okay, so we will consider the triangle APC. Here we will use trigonometry. Clear? So solution first. In triangle ACP, अभी यहाँ पे अपने को ACP के अंदर अपने को AP पता है, एंगल अपन यहाँ पे सिंस एंगल C कंसिडर कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड जो AP है दैट विल बी परपेंडिकुलर एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इज AC, सो AC विल बी हाइपोटेनस. अब यहाँ पे P और H को कंसिडर करते हुए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है अपना, वो बनता है साइन और कोसेक. आप कोई सा भी यूज कर लो, कोई दिक्कत बात नहीं है, मैं यहाँ साइन यूज कर रहा हूँ. सो अपन बात करेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू दैट इज AP बाय AC, since sin is P by H. So sin 60 is root 3 by 2 is equals to AP. AP is 1.8 upon AC. So from here AC will be equals to 1.8 into 2 upon root 3. For simplification we will rationalize it multiplying root 3 to numerator and denominator both. So from here we will get AC is equals to 1.8 into 2, that is 3.6 root 3 upon 3. On further solving it, we will get 1.2 into root 3. We have to use root 3 in is equals to 1.73, and this will be equals to 2.076 meters, and this is the answer. Clear? Now in question number 2, it is asking find the length of AR. Okay, सो अपन यहाँ पे देखो, इसमें देख सकते हैं अपने को फाइंड करना AR. सो यहाँ पे अपन कंसिडर करेंगे ट्राइंगल AJR. अब मुझे बताओ ये 60 है. अब सिंस ये तीनों ही आपस में क्या है, पैरेलल है. RS इज पैरेलल टू LM, LM इज पैरेलल टू CD एंड पैरेलल टू AB. सो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और यहाँ पे ये जो एंगल है अपना ये भी कितना होगा, दिस विल बी 60 डिग्री. और यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में बोला गया था कि AG इज इक्वल टू JK इक्वल टू KP. मीन्स AJ जो है अपना JK के इक्वल है और KP के इक्वल है. मीन्स इफ वी डिवाइड 1/8/3 वी विल गेट द वैल्यू ऑफ AJ इन ट्राइंगल AJR. मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी आए. दिस इज A, दिस इज J एंड दिस इज R. Now AJ is equals to 1.8/3, that is equals to 0.6 meter. So this is 0.6 meter. This angle is 60 degree, and what we have to find is we have to find AR. So since we are considering the angle R, so in front of this AJ will be perpendicular. This is equals to perpendicular, and what we have to find is H. Again अपन क्या यूज करेंगे, साइन यूज कर लेते हैं. तो साइन 60 डिग्री is equals to AJ by AR. Sin 60 is root 3 by 2 is equals to AJ. AJ is 0.6 AR. So AR is equals to 0.6 into 2 by root 3. On rationalizing it, we will get 1.2 by 3 into root 3, that is 0.4. 0.4 into root 3, that is equals to, so यहाँ पे अपन root 3 की जगह यूज करेंगे 1.73. so we will get 0.4 into 1.73, that is equals to 0.692 meters. क्लियर? अब इस क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते थे. कैसे? अपने को BPT पता है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का पढ़ा है. अब देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल में ACP के अंदर अपने को AP पता है. AC अपन ने अभी भी फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था. फर्स्ट क्वेश्चन में अपन क्या कर सकते थे, यहाँ पे BPT यूज कर सकते थे. कैसे? ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में ये साइड जो है ये इसके पैरेलल है, दोनों आपस में पैरेलल है भाई. अब पैरेलल हैं तो अपन ने BPT में पढ़ा था कि किसी ट्राइंगल में कोई भी पैरेलल लाइन अगर दो साइड्स को कट करती है तो वो इक्वल रेशियो में कट करती है.
सो अपन यहां पे क्या कर सकते थे, ए आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए जे अपॉन ए पी। अब ध्यान से देखो, ए सी अपने को पता था, ए आर अपने को निकालना है। मुझे बताओ ए पी भी अपने को पता था, और ए जे अपने को कैसे पता था, बिकॉज ये तीनों इक्वल है भाई, तो 1/3 हो जाता 1.8 बाई 3 0.6। सो वहां से भी अपन क्या कर सकते थे, इसमें बीपीटी यूज करते हुए अपन ए आर निकाल सकते थे। क्लियर है? मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी मेथड से आप जा सकते हो। ठीक है, थर्ड पार्ट में पूछ रहा फाइंड द लेंथ ऑफ स्टेप एल एम। अब एल एम फाइंड करने के लिए ध्यान से देखो, मुझे बताओ के एम इज इक्वल टू अपने गिवन है दैट इज 0.5, दिस इज 0.5। अब अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है एल के एंड लेट्स से दिस इज द पॉइंट टी, एल के एंड टी एम अपने को फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पे अपन अगर एल के निकाल लें तो ऑटोमेटिकली टी एम की वैल्यू भी उतनी होगी। क्यों होगी? क्योंकि अपना ध्यान से देखो, जो ट्राइंगल है ए सी पी एंड बी क्यू डी दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। क्यों है? ए एस ए से अपन बता सकते हैं, ए एस से भी अपन इसको बोल सकते हैं। कैसे? ये 60 डिग्री है, ये भी 60 है, ये 90 है अपना, ये 90 है, तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा भाई, ये वाला भी। ठीक है, और अपने को ये पता है कि ए पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये अपने को गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में। सो अपन बोल सकते हैं ए एस ए से दोनों क्या हो गए, अपने कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, मुझे बताओ ये 60 है तो ये भी यहाँ भी कितना है 60, ये भी कितना है 60 डिग्री। अकॉर्डिंगली अपन एल के और एम टी फाइंड करने जाएंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और बीपीटी वट एवर अपन यूज करने जाएंगे, तो वहां पे अपनी जो वैल्यू मिलेगी एल के की दैट विल बी इक्वल टू टी एम। क्लियर है? ठीक है, अब यहां से अपन फाइंड करते हैं क्या, एल के इन ट्राइंगल ए के एल, दिस इज 60 डिग्री। अब अपने को यहाँ पे क्या ए के पता है? बिल्कुल पता है, बिकॉज 1.8/3 दैट इज 0.6 and this is zero point 0.6, this is 0.6, so this whole is 1.2. Clear? So AK is equals to 1.2 meter. Okay, what we have to find is LK. Since we are considering angle L, so इसके सामने वाली जो साइड है दैट इज ए के, वो अपनी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये अपना क्या हो जाएगा, एल के विल बी बेस। सो परपेंडिकुलर और बेस को अगर यूज करते हुए अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखें तो वो कौन सा हो सकता है, 10 या कोट। मैं यूज कर लेता हूँ 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए के अपॉन एल के। So 1060 is root 3, that is equals to AK is 1.2 upon LK. From here LK will be equals to 1.2 by root 3. On rationalizing it we will get 1.2 root 3 by 3. So from here we will get 0.4 into root 3, that is equals to 0.4 into 1.73 is equals to, on multiplying we will get 0.692. So from here we can write Lm is equals to 2 times of Lk plus Kt. So from here we will get 2 into 0.692 plus Kt is 0.5, 1.884 meter. This is the answer. Clear? Okay, next in third or part it is asking about find the length of step RS. सेम वही मेथड होगा भाई। RS में अगर बात करें तो यहाँ पे RS क्या है, दिस इज RS साइड RS। ओके, सो यहाँ पे अपने को ये तो पता ही है, ये लेंथ है 0.5 मीटर। अपने को पता करना है RJ। RJ का डबल क्या हो जाएगा अपना, इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं, लेट्स से दिस इज X. So RJ will be equals to XX. Okay, so third or part. Now this is 60, so this will also be 60 degree. Okay, so now in triangle AZR, AZ is equals to, that is equals to 1.8 by 3, that is equals to 0.6 meter.
ओके, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इज आरजे। यहाँ पे एजे क्या होगी, देखो इसके सामने साइड पे परपेंडिकुलर होगी भाई, और आरजे अपना बेस होगा, तो अगेन अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टेन थीटा यूज कर लेते हैं, तो टेन 60 डिग्री will be equals to AJ by RJ. So this is 1060 is root 3 is equals to AJ. AJ is what? 0.6 by RJ. So RJ will be equals to 0.6 by root 3. On rationalizing it, we will get 0.6 root 3 by 3. So from here, this will be 0.2 root 3. So 0.2 into root 3, we will use 1.73, that is equals to 0.346 मीटर। तो यहाँ पे अपने को फाइंड करना था आर एस, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर जे प्लस जे एक्स। So this is 2 times of 0.346 plus jx. Jx is 0.5. From here, you will get 0.692 plus 0.5. So this will be equals to 1.192 meters. This is the answer. Clear? Okay, now in question number 3, it is saying the students of class 10th of a secondary school have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. Saplings are being planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grass lawn in plot as shown in the figure. The students are to row seeds of the flowering plant on the remaining area of the plot. ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है कि अपने पास में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में अपन ने क्या किए हैं, सीडलिंग्स जो हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे क्या किए हैं, प्लांट किए हैं ये वाले। और इस प्लॉट के बीच में अपने पास में एक ट्रायंगुलर ग्रास लॉन है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो बच्चे हैं वो क्या करना चाहते हैं, सीड्स जो बोएंगे यहाँ पे, वो क्या करेंगे, जो रिमेनिंग जो जगह है इस पे वो क्या कर रहे हैं, सीड्स शो करेंगे। ओके, first question is asking if a tree is to be planted exactly in the middle of triangle PQR, that is the centroid of triangle PQR, to give shade to the people sitting in the lawn, then find the coordinates of the point where the tree should be planted. Okay, अब यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं है, ये पूछ रहा है कि जो ट्रायंगल PQR है इसके सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट बताने हैं आप, और वहीं पे जो ट्री है वो वहाँ पे प्लांट करेंगे ताकि लोगों को छाया मिल जाए। ओके, ठीक है। सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं। जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x कोऑर्डिनेट इज 3, ओके, एंड y कोऑर्डिनेट इज आल्सो 3, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, Q के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट इज 8 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2, ओके, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R, that is x coordinate is 6 and y coordinate is 5। अब अपने को पता है कि जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मैं बोलता हूँ लेट्स से वो है x, y। सो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y, अपने को फॉर्मूला पता है, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। सो अगर ये x1, दिस इज x2 एंड दिस इज x3, इसी तरीके से अपन इसको y1, y2 एंड y3 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू x1 इज 3 प्लस 8 प्लस 6 बाई 3 कोमा y1 is 3 plus 2 plus 5 by 3. So from here we will get 8 plus 3, that is 11 plus 6 17 by 3 comma 10 by 3, and this is the answer. Clear? Next question number 2 में पूछ रहा है what type of triangle is formed by the grass lawn. Okay, so in second what we have to find is we have to find the distance PQ, QR and RP, तभी अपने को पता लगेगा भाई कौन सा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, स्केलन है या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अपन इसका क्या करते हैं, लेट्स से PQ फाइंड करते हैं सबसे पहले, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8 minus 3 whole square plus 2 minus 3 whole square. This is equals to 5 square, that is 25, plus minus 1 square is 1, that is under root 26. Okay, next is QR. QR will be equals to
6 minus 8 whole square plus 5 minus 2 whole square. From here 2 minus 2 square is 4 plus 9, that is root 13. And next is PR. So PR is equals to under root 6 minus 3 whole square plus 5 minus 3 whole square. This is equals to 3 square is 9 plus 4, that is root 13. अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा आपको कि देखो पहला तो अपने को समझ में आ रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल पूरा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखो, अगर मैं पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर करता हूँ दैट इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। सो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से अपने को समझ में आ रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है। सो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? और यहाँ पे अपन लिखेंगे सिंस पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। यहाँ रूट 13 स्क्वायर प्लस रूट 13 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 26 स्क्वायर, दैट इज 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 26। अब यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। दिस इज द आंसर। क्लियर? Okay. Now, in question number 3, it is saying find the area of the plot in which the students have to row the seats. Okay. अब यहाँ पे देखो, अपन ने सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपन ने साइड्स की लेंथ भी निकाल ली है। सो पी क्यू कितना था अपना? पी क्यू वॉज रूट 26, क्यू आर वॉज रूट 13 एंड आर पी वॉज या पी आर वॉज रूट 13। ओके। और अपने को ये पता है कि ये क्या है अपना? राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके। अब इससे क्या होगा? अपन इजीली इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। वो क्यों निकालेंगे? क्योंकि अपने को ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका एरिया बताना है। ये एक रेक्टेंगल है, इसके एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो अब रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। ठीक है जी। सो यहाँ से अपन लिखेंगे एरिया ऑफ प्लॉट टू रो द सेट, दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. So from here, area of ABCD. So area of ABCD, it is rectangle. So area will be length into breadth. So length is 13 and breadth is 9 into 9 minus area of triangle PQR. This will be half of base root 13 into height, that is root 13. So from here we will get 117 minus 13 by 2. So this is 117 minus 6.5 is equals to 110.5, and this is the answer. Clear? Okay, now in third or part, it is asking if a special flowering plant has to be planted at the point which divides the line joining the points C and Q in the ratio 2:3. Then find the coordinates of the point where this plant will be planted. Okay. सो यहाँ पे अपने को यूज करने के लिए बोला गया है क्या? इनडायरेक्टली बोला गया है कि आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करो। ठीक है जी, कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को बोला गया है कि सी से क्यू को ज्वाइन करने वाले जो लाइन है उसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। मैं बोलता हूँ लेट से दैट पॉइंट इज एस एंड इसके जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोमा वाई। अब एक चीज़ ध्यान देना, अब यहाँ पे गलती होगी। रेशियो क्या है? 2:3। तो आप क्या लिखोगे? 2:3। नहीं, दिस विल बी रॉन्ग। क्यों? बिकॉज इसने बोला सी से क्यू को ज्वाइन करने पे, सी से क्यू को ज्वाइन करने पे मतलब 2:3। यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। क्लियर? ये सिली मिस्टेक नहीं करनी एग्जाम में। अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है, दैट इज 8,2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है अपने? दैट इज 13,9। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस दैट इज x, y विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो 3 into 13 plus 2 into 8 upon 3 plus 2. So this is 3 into 13 plus 2 into 8 upon 3 plus 2, comma y coordinate is 3 into 9 plus 2 into 2 upon 3 plus 2. So here 3 into 9 plus 2 into 2 by 3 plus 2. सो यहाँ से जो अपना आएगा दैट इज 39 plus 16
upon 5 comma 27 plus 4 by 5. यहाँ से करेंगे तो दिस विल बी 55 upon 5 comma 31 by 5. This will be 11, so 11 comma 31 by 5. So यहाँ से लिख देंगे अपन therefore coordinates of required point are 11 comma 31 by 5 is the answer. Clear? Okay, next is question number 4. Question number 4 में बोल रहा है shown below is the trophy shield Akshi received on winning an international table tennis tournament. The trophy is made up of glass sector DOC. So this is DOC. This is glass sector. Okay, supported by identical right triangles, triangle DAO. So this is DAO, right angle triangle, and second is triangle COB. So this is COB. Identical means these both triangles are congruent. Okay, also OA is equals to 7. This is 7, so this will also be 7. Okay, why? Because both are congruent triangles. And it is given that OA ratio DA is equals to 1 is to root 3. Okay, AO and DA, this is root 3. This is 7, then this will be 7 root 3. Because if this is 1, then this is root 3. If this is 7, then this is 7 root 3. We are given the ratio, na? Use root 3 equals to 1.73. Based on the given information, answer the following questions. First, find angle DOC. So we have to find this angle. If we find angle AOD, this angle, then this will be equals to this. Then we can easily find this angle. How? We will minus the sum of these two angles from 180 degree. Okay, so firstly in triangle DAO, what we have to find is we have to find this angle DOA. So let's say this is angle theta, this is theta. So in front of this angle, this will be perpendicular and this will be base. So using perpendicular and base, we can consider the trigonometric ratio tan theta. So tan theta is equals to P by B. P is DA by AO. So from here, DA is 7 root 3 and AO is 7. So this is root 3. So tan theta is equals to root 3. So from here we can say at what value of theta, tan theta is root 3, that is 60. So theta is equals to 60 degree. And since this is 60, so this will also be 60. So from here we can write angle DOC will be equals to 180 degree minus twice the angle DAO. So from here we can write 180 degree minus 2 times of 60 degree, that is 120 degree. This is 60 degree is the answer. Clear? Okay. Now in question number 2, it is asking find the area of wooden triangles. Okay, area of wooden triangle. We are having these two triangles. So we will find area of wooden triangle will be equals to 2 times the area of triangle DAO. So that is equals to 2 times of, अब area of triangle अपने फॉर्मूला पता है, half into base, base is 7 into height, height is DA, that is 7 root 3. So 2 will cut this 2, so we will get 49 root 3. And instead of root 3, what we have to use is, we are given use 1.73. अब ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में बोला गया तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है. So this will be equals to 84.77 centimeter square. This is the answer. Clear? Next, question number 3, it is asking find the area of the shape formed by the glass portion. Now what we have to do is we have to find the area of this sector. Now we know the area of sector, that is equals to theta by 360 degree into pi r square.
Here radius is what? This is equals to do and equals to co. Okay, so to find do अपन क्या करेंगे, अपन ट्राइंगल डी ए ओ को कंसिडर करेंगे, इस ट्राइंगल को, ठीक है। सो अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए डीओ निकाल लेंगे। सो इन ट्राइंगल डी ए ओ, do square is equals to da square plus ao square. So do whole square is equals to da. Da is what? 7 root 3 square plus ao is 7 square. So from here do square will be equals to 49 into 3 plus 49. So from here do square is equals to 49 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 3 plus 1, that is 49 into 4. Now what we have to find is do, that will be under root 49 into 4. So do अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 49 में 7 आ जाएगा और 4 में से 2 आ जाएगा, प्लस माइनस दो वैल्यू हो जाएंगी, बट सिंस अपन लेंथ की बात कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगी, दैट इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. So from here r is equals to 14 सेंटीमीटर. ओके, अब अपने को कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देनी है. सो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल्स टू, अब ध्यान रखना यहाँ पे अपने को थीटा ही पता है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था डीओसी, दैट वाज 60 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू थीटा, दैट इज 60 by 360 into pi is 22 by 7 into r square, that is 14 into 14. So from here we will get, this is 6 and this is 2, this is 3 times, so we will get 22 into 14 by 3. On solving it we will get, that is equals to 102.666 आएगा. सो अपन यहाँ पे लिख देंगे 67 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर. क्लियर? Now in third part we have found the r, so this do is basically 14 centimeter. Okay, now in our part it is asking if Akshi wants to decorate the boundary of glass portion with glitter tape, then find the length of the tape she needs. Okay, अब यहाँ पे अपने को बेसिकली क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है इसका, पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर. सो दिस विल बी आर आर एंड दिस इज एल. अब अपने को ये तो पता है भाई, ये आर है ये भी आर है, दोनों निकाल लिया अपन ने 14. अब अपने को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ दिस आर्क. सो यहाँ पे अपन लिखेंगे लेंथ ऑफ द टेप required, that will be equals to length of arc DC plus 2 times of radius r. So length of arc DC will be equals to, we know the formula, theta by 360 degree into 2 pi r plus 2r. We will put the values. Theta अपने को पता है, that is 60 degree, 60 by 360 into 2 into 22 by 7 into r, r is 14 plus 2 times of r, that is, on solving it further, this will be 6, this will be 3, यहाँ से अपन 7 से कट कर दे इसको 2 times, so we will get 44 by 3 plus 28. On solving further we will get 42.666, that is 7 centimeter. This is the answer. Clear? Okay, next is question number 5. In question number 5 it is saying Mayank and Priyanshu plan to play business board game in which they were supposed to use 2 dice. तो बेसिकली अपने को यहाँ पे 2 डाइस वाला केस लेना है. अब समझ में आ गया अपने को सीधा सा कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. तो 2 डाइस के अंदर सबसे पहले सैंपल स्पेस की बात करें. सैंपल स्पेस में टोटल कितने इवेंट्स होते हैं? टोटल 36 इवेंट्स होते हैं अपने. भाई टोटल आउटकम्स क्या होते हैं जब दो अपने पास में क्या हों, डाइस हों. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे जो अपन बोलते हैं सैंपल स्पेस, दैट विल बी 1,1, फर्स्ट पे 1 आ जाए, फर्स्ट पे 1 आ जाए, सेकंड पे 2 आ जाए, सो ऑन करते करते अपन कहाँ तक पहुँचेंगे, 1 से 6 पे. इसी तरीके से फर्स्ट पे 2 आ जाए, सेकंड पे 1, फिर अपना 2,2 एंड सो ऑन 2,6. इसी तरीके से अपन करते 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 लास्ट वाले जो कॉलम आता है दैट इज 6,1, 6,2 एंड सो ऑन 6,6.
तो ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट में देखो कितने टोटल एलिमेंट्स है, 6 6। इसी तरीके से टोटल अपने पास में जो रो आएंगे वो 6 आएंगे। तो एक रो में 6 हैं तो टोटल 6 रोज में कितने हो जाएंगे, 36। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है मैंक गोट फर्स्ट चांस टू रोल द डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ फेस ऑफ द डाइस इज 8। अब अपने को पता है कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। सो यहाँ पे अपन बात करते हैं फेवरेबल आउटकम्स। वो क्या है, वो अपना हो सकता है कि भाई पहले पे टोटल सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो पहले पे क्या आ सकता है, पहले पे 1 आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि सेकंड पे 6 भी आ जाएगा तो अपना 7 होगा। फर्स्ट पे 2 आ जाए, सेकंड पे 6 आ जाए। दूसरा इसका रिवर्स कर दें, सेकंड पे 6 आ जाए और फर्स्ट पे 2 आ जाए। ओके, और क्या हो सकता है, फर्स्ट पे 3 आ जाए और सेकंड पे 5 आ जाए। ओके, और फर्स्ट पे 5 आ जाए और सेकंड पे 3 आ जाए। इसी तरीके से क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, दोनों पे 4 4 आ जाए। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं। तो यही अपने फेवरेबल आउटकम। अब अपने फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं टोटल, दैट इज 1 2 3 4 5। एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स दैट इज इक्वल टू 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ई क्या है अपना, appearing the sum 8 on both the dice, that is equals to 5 upon total outcome 36. This is the answer. Clear? Next question number 2 में पूछ रहा है प्रियांशु got next chance in the game. What is the probability that he got the sum of the two numbers appearing on the top face of the dice as 13? अब ध्यान से देखो, कॉमन सेंस से मुझे बताओ, दोनों का सम दोनों डाइस पे क्या 12 से बड़ा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम एक डाइस पे 6 आ सकता है, दूसरे पे 6 आ जाए, दैट इज 12। तो सम 13 तो हो नहीं सकता। तो सेकंड में सिंपली अपन क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं अपने, आउटकम्स दैट इज इक्वल्स टू 0। टोटल आउटकम्स अपने को पता है, टोटल आउटकम्स दैट इज इक्वल्स टू 36। सो probability of that event that is equals to 0 by 36, that is equals to 0. This is the answer. Clear? Okay. Now in third part it is saying what is the probability that Priyanshu got the sum of the two numbers appearing on the top face of the dice as 7. ओके, सो यहाँ पे अपना जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो क्या है, बेसिकली उनका अपन कलेक्शन लिख लेते हैं पहले। तो वो है कि जो सम आ रहा है दो नंबर्स का वो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो पहले पे 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 1,6 हो, या फिर 6,1 फर्स्ट पे 6 आ जाए, सेकंड पे 1 आ जाए। क्या पहले पे 2 आ सकता है, बिल्कुल, सेकंड पे 5 आएगा। इसी तरीके से अगर फर्स्ट पे 5 आ जाए और दूसरे पे 2 आ जाए, इसी तरीके से अगर फर्स्ट पे 3 आ जाए, सेकंड पे 4 आ जाए, और फर्स्ट पे 4 आ जाए, सेकंड पे 3 आ जाए। और क्या हो सकता है 7 आने के लिए, 5 वाला केस, फर्स्ट पे 5 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, वो अपन कर चुके हैं। अब अपने पास बचा है क्या, 1 और 6 वाला, वो भी अपन ने कर लिया भाई। तो अपने पास में फेवरेबल आउटकम्स कितने आए टोटल, दैट इज 6। टोटल आउटकम्स दैट इज इक्वल्स टू 36. So probability of this event E is equals to favorable outcome is 6 upon 36. So this will be 1 by 6. This is the answer. Clear? Okay. Now in third or part it is asking, now it was again Mank's turn. He rolled the dice. What is the probability that he got sum of the two numbers appearing on the top face of dice as greater than 8? 8 से बड़ा होना चाहिए नंबर दोनों का सम, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने को फेवरेबल आउटकम चाहिए भाई। तो फेवरेबल आउटकम्स का अपन क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। तो क्या फर्स्ट पे 1 आ सकता है, क्या नहीं, क्योंकि 6 पे आए, दूसरे पे 6 आएगा तो 7 ही होगा। फर्स्ट पे 2 आ सकता है, नहीं, क्योंकि दूसरे पे 6 आएगा तो भी 8 के इक्वल हुआ, बड़ा तो नहीं हुआ। फर्स्ट पे 3 आ सकता है, तो अगर फर्स्ट पे 3 आए तो दूसरे पे क्या आ सकता है, 6, या फिर फर्स्ट पे 6 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए। क्या फर्स्ट पे 4 आ सकता है, क्या बिल्कुल आ सकता है। दूसरे पे क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर पहले पे 5 दूसरे पे 4 आ जाए। नेक्स्ट, अगर फर्स्ट पे 4 आए और सेकंड पे 6 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर फर्स्ट पे 6 आए दूसरे पे 4 आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपन ने 3 ले लिया, 3 वाला केस, 4 वाला केसेस ले लिए। अब नेक्स्ट क्या लेना अपने को, 5 वाला। तो पहले पे 5 आ जाए और दूसरे पे क्या है, दूसरे पे 4 आ सकता है, पर वो कर चुके हैं अपन। तो दूसरे पे क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है।
पहले पे 5 आए और दूसरे पे 6 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या हो सकता है, पहले पे 6 आ जाए और दूसरे पे 5 आ जाए, ठीक है। 5 वाले केसेस भी हो गए। अब क्या बचा, 6। अब फर्स्ट पे 6 आ जाए तो दूसरे पे क्या आ सकता है, दूसरे पे अपना 4 आ सकता है, 3 भी आ सकता है पर वो कर चुके हैं, 4 भी आ सकता है वो भी कर चुके हैं, 5 आ सकता है वो ले लिया है अपन ने। अब दूसरा बचा क्या, 6। सो ध्यान से देखो यहाँ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 2, 4, 6, 8 एंड 10। और टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स that is equals to 36. So probability of this event is equals to 10 by 36. If we cut this, we will get 5 by 18. This is the answer. Clear? Next is question number 6. Question number 6 is saying in the month of September to October, the exports of cars from India increased by 25% in the corresponding quarter of 2021-22 as per newspaper reports. A car manufacturing company planned to produce 1800 cars in fourth year and 2600 car in eighth year. Assume the production increases uniformly by a fixed number every year. तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। सो यहाँ पे जो सिंपली अपने को दिख रहा है ये क्वेश्चन किसका है, एपी का है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट अपने को गिवन क्या है, अपने को गिवन है कि फोर्थ ईयर में प्रोडक्शन, भाई यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन होगा फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फिर फोर्थ में आया 1800, फिर उसके बाद में क्या आया, एट्थ ईयर में कितना आया, दैट इज 2600। सो ऑन करते करते कहीं 2600 आया होगा, ठीक है, ओके। सो अपने को गिवन है कि फोर्थ टर्म दैट इज A4, A4 इज गिवन दैट इज 1800 एंड यहां से मैं A4 को अपन क्या बोल सकते हैं, A4 विल बी A प्लस 3D दैट इज इक्वल टू 1800 एंड अपने को एट्थ टर्म दी है दैट इज A8, दैट इज A8 दैट इज इक्वल टू 2600। सो A8 क्या होगा अपना A प्लस 7D दैट इज इक्वल टू 2600। अपने पास में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल A और D निकाल लेते हैं यहाँ से। सो A और D निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मैं बोल देता हूँ इसको फर्स्ट इसको सेकंड। सो अपन कर लेते हैं क्या, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो ये वाला अपना माइनस, ये माइनस और ये माइनस, सो ए विल कैंसिल आउट। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 4D is equals to 800 and D is equals to 200. Okay, now we have found D, so we can easily find A. So from 1 we can say A plus 3D that is 200 is equals to 1800. So from here we will get A is equals to 1800 minus 600 that is 1200. Now A is what, A is first term that is production in first year. So A is 1200, so यहाँ से अपन बोल देंगे therefore production in first year is 1200. This is the answer. Clear? Okay, in second part it is saying find the production in the 12th year. Okay, so we have to find A12 that is A plus 11D. A we have found that is 1200 plus 11D, D is what, 200. So from here we will get 1200 plus 2200 that is equals to 3400. This is the answer. आपको वर्ड्स में लिख के आना वहाँ पे है ना, the production in 12th year will be 3400. थर्ड में बोला find the total production in first 10 years. Okay, so here what we have to find is sum of first 10 terms. So as 10 will be equals to 10 by 2, 2A, A is what, 1200 plus n minus 1 D, n is 10 that is 9 into D is 200. So from here we will get 5. Let me rub this part. So this is equals to 5 into this is 2400 plus 1800. So this is equals to 5 into 4200. From here we will get 21,000 and this is the answer. You have to write it in words. So in the first 10 years the production will be 21,000 cars. Okay, now our part, in how many years will the total production reach 31,200? Now we know that A is 1200 and D is 200 and question is asking in how many years the total production will be 31,200. So let's say let
in n years the production will be 31,200. Now what we have to find is sum, basically n years, so terms will be n, so sum of n terms, that is n by 2 2a plus n minus 1 into d. We know the formula, put the values. Sum of n terms kitna hai, that is 31,200 is equals to n by 2 2a, that is 2 into 1200 plus n minus 1 into d is 200. From here we will get 31,200 is equals to n by 2 2400 plus 200 n minus 200. Okay, taking this 2 to the left hand side, this will be 62,400 n into here 2400 minus 200, that will be 2200 plus 200 n. On solving it further, we will get 62,400 is equals to multiplying n inside, that is 2200 n plus 200 n square. Okay. Now taking this term to the right hand side, we will get 200 n square plus 2200 n minus 62,400 is equals to 0. Now what we can do is we divide by this 100 and again by 2. We will get n square plus 11n minus 312 equals to 0. Now splitting the middle term, we will get n square plus 24n minus 13n minus 312 equals to 0. Taking n common, we will get n plus 24 minus 13 n plus 24 is equals to 0. From here n will be equals to 13 or n is equals to minus 24. N can't be negative, so n will be equals to 13. So here we can write in 13 years production will reach 31,200 cars. This is the answer. Clear? Okay. नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 3 पर्सन L, M and N are sitting on the circumference of a circle. Let coordinates of position of L, M and N be 6, minus 6, 3, minus 7 and 3, 3 respectively. Okay. So question is saying these 3 person are sitting at, let's say this is L, this is M and this is N. Coordinates of point L are 6, minus 6, M are 3, minus 7 and N are 3, 3. Okay. Now question number 1 is asking find the distance between L and M. So using distance formula, Lm will be equals to under root, let's say this is x2, 6 minus 3 whole square plus y2 minus y1, that is minus 6 minus 7, that is plus 7 whole square. From here we will get 9 plus 1, that is equals to under root 10 unit. This is the answer. Clear? Okay. Next in question number 2, it is asking find the radius of the circle. Okay. Now let's say center of the circle be O and its coordinates are x, y. So firstly what we have to find is we have to find the center. Then we can find the radius. The radius will be equals to LO. Let's say this is R. OM, this will also be R, and ON, this will also be R. So to find the center, we have to find two coordinates x and y. There are two variables, so we need two equations to find the two coordinates. Okay, so what we can do is we will equate LO is equals to MO. So let's find the first equation. So LO, so this is L, this is O. So using distance formula, this will be equals to x minus 6 whole square plus y minus 6, that is plus 6 whole square, equals to MO. So this is MO. So this will be x minus 3 whole square plus y minus 7, that is plus 7 whole square.
Now squaring both sides, we will get x minus 6 whole square plus y plus 6 whole square equals to x minus 3 whole square plus y plus 7 whole square. On further solving it, we will get x square plus 36 minus 12x plus y square plus 36 plus 12y is equals to x square plus 9 minus 6x plus y square plus 49 plus 14y. Now x square will cut this x square, this y square will cut this y square. So on further solving it, we will get 36 plus 36, that is 72, minus 12x plus 12y is equals to this 9 plus 49 will be 58 minus 6x plus 14y. Now taking this to the left hand side, we will get 72 minus 58 and minus 12x plus 6x plus 12y minus 14y equals to 0. 72 minus 58, that will be equals to 14 minus 6x and minus 2y equals to 0. Now multiplying whole equation by minus 1, we will get what? 6x plus 2y minus 14 equals to 0. Taking 2 common, we will get 3x plus y minus 7 equals to 0. So this is our first equation. Okay, now to find the second equation, we will equate OM is equals to ON. So OM will be equals to under root x minus 3 whole square plus y minus minus 7, that is plus 7 whole square equals to ON. ON will be equals to x minus 3 whole square plus y minus 3 whole square. Now squaring both sides, we will get x minus 3 whole square plus y plus 7 whole square, that is equals to x minus 3 whole square plus y minus 3 whole square. On solving it further, we will get x square plus 9 minus 6x plus y square plus 49 plus 14y is equals to x square plus 9 minus 6x plus y square plus 9 minus 6y. Now this x square will cut this x square, this y square will cut this y square. Now on further solving it, we will get 9 plus 49, that is 58 minus 6x plus 14y is equals to 9 plus 9, that is equals to 18 minus 6x minus 6y. Okay, this 6 minus 6x will cut this minus 6x. When we will take this to the left hand side, it will become positive 6x. So these will cancel out. So from here we will get 14y, taking this 6y to the left hand side plus 6y, and taking this 58 to the right hand side, this is 18 minus 58. So this is equals to 20y is equals to minus 40 and y is equals to minus 2. This is our second equation. Now putting the value of y in first, we can easily find x. So from 1 and 2, we can get 3x plus y is minus 2 minus 7 is equals to 0. So this will be equals to 3x minus 9 equals to 0. So 3x equals to 9. So x will be equals to 3. So we have found the coordinates of the center, that is 3 comma minus 2. So in place of this xy, we can write 3 comma minus 2. Okay, now what we have to find is, we have to find radius. So we can find the distance of L from point O. LO will be radius. Radius will be equals to LO, and that is equals to under root 6 minus 3 whole square plus minus 6 minus minus 2, that is plus 2 whole square. From here we will get 9 plus minus 4 square, that is 16. So from here we will get under root 25. So this will be equals to plus minus 5. But we are asked about radius, so it will be positive value. So this is 5 unit is the answer. Clear? Okay. Now in question number 3, it is asking find the coordinates of a point which is equidistant from L, M and N. So from common sense, we know that the point that is equidistant from all these 3 points is the center.
and that we have already found in second part. So in third part we will write point which will be equidistant from L comma M and N will be center of the circle, and that is equals to coordinates क्या होंगे इसके वो अपन ने find किए, that is 3 comma minus 2, and this is the answer. Clear? Okay. Now in third over part, it is asking find the coordinates of centroid of triangle LM and N. Now we know the formula to find the coordinates of centroid of a triangle. That is equals to, let's say, centroid of triangle LMN B, let's say T, and its coordinates are x comma y. So T x comma y, that will be equals to, the formula of centroid is x1 plus x2 plus x3 by 3, that is 6 plus 3 by 3, comma y1 plus y2 plus y3 by 3 minus 6 minus 7 plus 3 by 3. So from here we will get 6 plus 3 that is 12 by 3, that is 4, comma it will be minus 10 by 3, and this is the answer. Clear? Okay. In eighth question, it is saying three person B, D, E are looking at a point A which is 30 meter above the ground. Consider the diagram shown below. बेसिकली ये बोल रहा है कि जिन तीन पॉइंट्स है बी डी एंड ई पे तीन लोग बैठे हैं और वो पॉइंट ए को देख रहे हैं, और ये पॉइंट ए जो है ये ग्राउंड से कितना है हाइट पे है, दैट इज 30 मीटर अबव. ओके. Now question number 1 is asking find the distance of point B from A. So we have to find in this distance BA. So here we will be considering this triangle ABC. So in triangle ABC, now we are given this angle is 60 degrees. So in front of this angle, the side will be perpendicular. And what we have to find is, we have to find AB. So this we have to find hypotenuse. So considering P and H, we can write the trigonometric ratio, that is sine 60. So sine 60 is equals to P by H, that is equals to AC by AB. Now sine 60 is root 3 by 2 is equals to AC is 30 upon AB. So AB will be equals to 30 into 2 by root 3. So from here we will write AB is equals to 60 by root 3. On rationalizing it, we will get 60 root 3 by 3, and cutting this we will get 20 root 3 meters, and this is the answer. Clear? Okay. Now in question number 2, it is asking find the distance between C and D. So here what we have to find is, we have to find this side CD. So we will be considering triangle ACD. In triangle ACD, now we are given this angle is 45, so this will be perpendicular and CD will be base. So considering P and B, perpendicular and base, we can use the trigonometric ratio tan theta, that is tan 45 degree is equals to P by B, that is AC by CD. Tan 45 is 1, that is equals to AC. AC is 30 upon CD. So from here we will get CD is equals to 30 meters, and this is the answer. Clear? Now in third part, it is asking find the distance between D and E. Okay, we have to find this distance DE. We have already found in part 2, that is CD. So what we can do is, if we find CE and if we minus CD from it, we will get DE. So what we will do is, we will consider this triangle ACE. Okay. Now considering this triangle, we are given that this is 30 degree and this is 30 meter. So in front of this 30 degree, this side will be perpendicular, and what we have to find is base. In triangle ACE, considering P and B, again we will use tan theta, that is tan 30 degree will be equals to AC by CE.
So tan 30 degree is 1 by root 3 and AC is given, that is 30 upon CE. So from here we will get CE is equals to 30 root 3 meters. Okay, now what we have to find is we have to find DE, and we know that DE is equals to CE minus CD. So CE is 30 root 3 and CD we have found in second part, that is minus 30. So taking 30 common we will get under root 3 minus 1, and this is the answer. Now in third or part it is asking find the distance BD. Now to find BD, what we have to find is we have already found CD. Now we have to find BC. So in triangle ABC, we are given this is 60 degree and the side this will be P, and what we have to find is B. So using P and B, we can write the trigonometric ratio, that is tan 60 degree will be equals to AC by BC. So from here tan 60 is root 3 is equals to AC is 30 upon BC. So from here BC will be equals to 30 by root 3. So rationalizing it, we will get BC is equals to 30 root 3 by 3, that is 10 root 3. Now what we have to find is BD. So BD will be equals to BC plus CD. BC we have found, that is 10 root 3, and CD is already found, that is 30. So taking 10 common we can get root 3 plus 3 meters. This is the answer. Clear? Okay. Okay, now in question number 9, it is saying radio towers are used for transmitting a range of communication services, including radio, television. The tower will either act as antenna itself or support one or more antennas on its structure, including microwave dishes. They are among the tallest human-made structure. There are two main types: guide and self-supporting structures. On a similar concept, a radio station tower was built in two sections, A and B. Tower is supported by wires from point O. Distance between the base of tower and point O is 36 meter. From point O, the angle of elevation of top of the section B is 30 degree, and angle of elevation of the top of section A is 45. Okay. Now all the information is given in the figure. We are given that this is section B and this is section A, and this point O is at a distance of 36 meter from this tower, and the angle of elevation of section B is 30 degree and of section A is 45 degree. On the basis of above information, answer the following questions. What is the height of the section B? So to find height, what we have to consider is this triangle. Let's say this point is C. In triangle BCO, what we know is this, we are considering this angle 30 degree, so this will be perpendicular and this will be base. So what we have to find is find perpendicular. So considering P and B, we can use tan theta. So tan 30 degree will be equals to BC, that is P by B, B is CO. So tan 30 is 1 by root 3, that is equals to BC we have to find, and CO is 36. So from here BC will be equals to 36 by root 3. On rationalizing it, we will get 36 root 3 by 3. Cutting it, we will get 12 root 3 meters, and this is the answer. Clear? Okay. In question number 2, it is asking what is the height of the section A. What we have to find is we have to find this height A to B. So what we will do, we will find this complete height, and from this height we will minus this BC that we have already found in first part. So in second part we will be considering triangle ACO. Okay, so in triangle ACO, here angle is 45 degree. Okay, this is 45 degree, and this complete height will be perpendicular, and this will be base. So again we will be using tan theta. So tan 45 degree will be equals to, this point was C, is equals to AC by CO. Tan 45 is 1 is equals to AC
upon CO. CO is 36. So AC is equals to 36 meters. Okay, now what we have to find is we have to find AB. So AB will be equals to AC minus BC. AC we have found, that is 36, and BC we have already found in part 1, that is 12 root 3. Taking 12 common, we will get 12 3 minus root 3 meters, and this is the answer. Clear? Okay. In third part, it is asking what is the length of the wire structure from the point O to the top of the section A. Again, we have to find this length. So we will be considering this triangle ACO. So in triangle ACO, what we have to find is AO. So here we are given this is 45 degree. So this will be hypotenuse and this is base. So considering base and hypotenuse, we can use trigonometric ratio cos theta. So cos 45 degree will be equals to CO upon AO, B by H. So cos 45 degree is 1 by root 2. CO is 36 and AO is what we have to find. So AO will be equal to 36 root 2 meters, and this is the answer. Clear? Okay, in third or part, it is asking what is the length of the wire structure from the point O to the top of section B. Again, we have to find this length BO. So now we will consider BCO. So in triangle BCO, so this angle is 30 degree. So this CO will be base and BO will be hypotenuse. Again, we will use cos theta, that is cos 30 degree is equals to CO upon BO. Cos 30 is root 3 by 2. CO is basically 36 and what we have to find is BO. So from here BO is equals to 72 by root 3. So on rationalizing it, we will get 72 root 3 by 3. On cutting it, we will get 3 to the 6, 3 4 are 12, 24 root 3 meters, and this is the answer. Clear? Okay, now last question, that is question number 10, is saying Mr. Rahul Anand thought of making a floor pattern. To ensure accuracy in his work, he made the pattern on the Cartesian plane. He used regular, octagon, square, and triangles for his floor tessellation pattern. Okay. Now, here it is saying that these all figures are basically either they are octagon, square, or triangles. Okay. Now, question number 1 is asking what is the length of the line segment joining A to E? Coordinates of point A. This is point A. So x coordinate is -2, comma, y coordinate is 2. That is -2, comma 2. And point E, coordinates of point E. This is point E. So point coordinates of point E are 1, comma 9. So what we have to find is AE. So using distance formula, we can easily find it. So 1 minus -2, that is +2 whole square, plus 9 minus 2 whole square. So from here AE is equals to under root 9 plus 7 7 is 49, that is equals to under root 58 unit. This is the answer. Okay. Now in question number 2, it is saying the center Y of the figure will be point of intersection of diagonals of rectangle ADEH. So here we are talking about ADE and this is H. Okay. So coordinates of point A, we have already written that -2, 2. D, coordinates of point D. So this is 3 and this is 7. So this is 3, 7. And coordinates of point E. So this is E. We have already written that E in first part, that is 1, 9. And coordinates of point H. This is point H. So coordinates of point H are basically this is -4, comma this is 4. Okay. Now in question it is saying that center of this whole figure is where the diagonals of this rectangle intersect each other. So we know that diagonals of a rectangle bisect each other.
So basically this will be the midpoint of point A and E and also H and D. So here what we have to do is, firstly we have to mention that diagonals of a rectangle bisect each other. So coordinates of y, we are saying this point y will be equals to, we will use midpoint formula. So I am using midpoint of the line joining A to E. Okay, so coordinates of y will be equals to midpoint of line joining A to E, that we can easily find. So y will be equals to midpoint using midpoint formula. So a x1 plus x2 by 2 minus 2 plus 1 by 2 comma y1 plus y2 by 2, that is 2 plus 9 by 2. So from here we can write it as minus 1 by 2 comma 11 by 2, and this is the answer. Now in third part, it is asking what are the coordinates of the point on y-axis which is equidistant from A and G. So what it is asking is the coordinates of a point which is lying on y-axis which is equidistant from A and G both. Okay. So let me say there is any point X that is lying on y-axis. So if it is lying on y-axis, so x coordinate of that point will be 0. And what we have to find is, we have to find the coordinate y. On y-axis, the x coordinate of any point is 0. So let me say, let point x whose coordinates are 0 comma y is equidistant from point A and Z. So from here what we can say is ax will be equals to zx. Okay. Now the coordinates of point A. So coordinates of point A, this is minus 2 comma 2, and coordinates of point Z, this is point Z. So x coordinate is minus 4, y coordinate is 7. So the using distance formula we will find Ix, that is under root minus 2 minus 0 whole square plus 2 minus y whole square is equals to under root minus 4 minus 0 whole square plus 7 minus y whole square. Okay, now squaring both sides we will get minus 2 whole square, that is 4, plus this is 4 plus y square minus 4y is equals to 16 plus 49 plus y square minus 14y. Okay, now y square will cut this y square. So from here we will get 8 minus 4y is equals to 49 plus 16, that is 65 minus 14y. So taking this 14y to the left and 8 to the right, we will get, so this will be 14y minus 4y, that will be 10y is equals to 65 minus 8, 57. So y will be equals to 57 by 10. So the coordinates of the point x will be 0 comma 57 by 10, and this is the answer. Clear? Now in question number 3 or part, it is asking what is the area of trapezium BCDE. Okay, so what we have to find is, this is BC, D, and this is E. Okay, we know the formula of area of trapezium. So third or part, area of trapezium, that is equals to half of sum of parallel sides into height. So in this case, this BE and CD are parallel. Okay, now that is equals to half into sum of parallel side, that is BE plus CD into height. And height is what? Height is the distance between these two lines. Now what we have to find is length of this BE. So this point E is called, y coordinate is 9 and the y coordinate of B is 2. So BE will be equals to 9 minus 2, that is 7 unit, plus CD. This is CD.
Coordinates, y coordinate of D is 7 and y coordinate of C is 4. So this will be 7 minus 4, that is 3, into height. Okay, to find this height we can easily observe that coordinates, x coordinate of this point, that is 1. Okay, and x coordinate of this point is 3. So 3 minus 1, this height will be 3 minus 1, so that will be equals to 3 minus 1, so that is equals to half into 10 into 2. 2 will cut 2, this will be 10 unit square. ओके, दिस इज द आंसर. ओके, यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले. नेक्स्ट वीडियो अपना असेसन रीजन पे आने वाला है. उसमें अपन 25 क्वेश्चंस लेंगे. जितने भी चैप्टर से जो भी असेसन रीजन बन सकते हैं वो सारे अपन कवर करेंगे वहाँ पे. चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.